मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी डार के बड़े दावे। आवाम को कुछ नहीं मिला। बदतरीन लोड शेडिंग शुरू। छोटी गाड़ी बड़ी कीमत। तूफान तबाही मचाएगा। आगाज में बजट की ही बात करेंगे। इस बार रिवायत से हटकर बजट पेश किया। तरक्याती बजट के लिए तारीखी रकम रखी है। वजीर खजाना इशाक डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस वाशी बहरान पर काबू पा लेने का दावा भी कर दिया। कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। मेरे नज़दीक मुआशी इस्तेहकाम हो चुका है। अब हमने शरह नमू बढ़ाने की तरफ जाना है। हम फूड सिक्योरिटी मुल्क बन सकते हैं। ज़राई इनकलाब लाना चाहते हैं। सस्ते कर्ज की फराहमी के लिए स्कीम ला रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने आटा, घी, चावल और दालों पर टारगेटेड सब्सिडी देने का भी ऐलान कर दिया। कहा पेट्रोलियम पर सब्सिडी कुछ लोगों से हजम नहीं हो रही। ना हमें किसी ने ये सब्सिडी देनी है और ना हालात ऐसे हैं। PIE और पाकिस्तान स्टील बिल से मुताल्लिक निजकारी को देखा जा रहा है। करेगा जो ये रट लगाते हैं ना, डिफॉल्ट, वो खुद जिम्मेदार हैं। मैं नहीं कहना चाहता था ये। ऑन द सेफ साइड 6 बिलियन की सब्सिडी रखी है। अल्लाह करे इसको खर्च करने की जरूरत ही ना पड़े और पाकिस्तान अपना जो जरूरियात है ड्यूरिंग द ईयर पूरी कर सके। आटे पे, घी पे, दालों पे, चावल पे, ये जो इन चीज़ों पे जो टारगेटेड सब्सिडी थी थ्रू यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉरपोरेशन, वो 2 चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है। एक तो ये है कि उसके लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है 35 बिलियन का। दूसरा ये कंसिडर हो रहा है, प्लीज डोंट गेट होल्ड ऑफ मी के क्यों 32 स्कोर को कंसिडर किया जा रहा है कि 40 तक कंसिडर कर लिया जाए। हमने अपना 1 से 16 जो ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन हैं उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह 35% एडॉक रिलीफ दी है और जो 17 से 22 है उनको 30%। इलेक्शन के लिए फंड्स रख दिए हैं। इलेक्शन होने भी चाहिए। वज़ीर ख़जाना इशाक डार का आम इंतखाबात से मुताल्लिक गोलमोल जवाब। इत्तिहादी सरबराहान की बयानात से लाताल्लुक़ी का इजहार भी किया। साथ ही उनके बयानात के पीछे छुपने की कोशिश भी करते रहे। बोले प्लान B पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। इलेक्शन इल्तिवा का बयान देने वालों से बात की जा सकती है। अगर कोई इस तरह के हालात हुए तो आइन को देखा जाएगा। और वज़ीर ख़जाना इशाक डार कई मौक़े पर लाजवाब नजर आए। सख्त सवालात पर परेशानी नुमाया थी। कभी आएँ बाएँ की, कभी कन्नी कतराने की कोशिश करते रहे। कई बार नागवारी का इजहार भी किया। अलाउंस दिहाइयों से चल रहा है, जिस साल आता है वो बिल्कुल उसमें शामिल नहीं होता और ये 5-7 जो एडॉक रिलीफ अलाउंस चल रहे होते हैं, जब वो स्पेस मिलती है उसको आप उसको मर्ज करते। ओ भाई इंक्रीमेंट जाहिर है, अगर अलाउंस नहीं होता इंक्रीमेंट में उसका कैसे आप कैलकुलेट कर। अलाउंस इज सेपरेट है जी, वही नहीं हो ही नहीं सकता ना। दिस इज सेपरेट आइटम, दैट इज द होल आइडिया। वरना फिर अब कर तो ये कंफ्यूजन काइंडली क्रिएट ना करें। ये जिस तरह एडॉक रिलीफ अलाउंस ट्रीट होता है उसी तरह। वज़ीर ख़जाना इशाक डार ने दूध पर सेल्स टैक्स की तरदीद कर दी। बोले 9% टैक्सेस लगने की खबर देखकर हैरत हुई। मुल्क में 90% खुला दूध बिकता है। सिर्फ तजवीज़ थी कि डब्बे के दूध पर टैक्स लगाया जाए। क्लियर करना चाहता हूं कि दूध पर कोई सेल्स टैक्स नहीं लगा। बहुत हैरानगी हुई कि कुछ टेलीविजन पे टिकर चल रहे थे कि जी दूध के ऊपर 9% सेल्स टैक्स लग गया। तो वो फिर डिबेट ये हो रही थी कि जी कल ग्वाले भी बढ़ा देंगे, हालांकि उन पर कोई असर होना नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि वो जो है अपना आपके मिल्क पैक इस तरह के जो होते हैं प्रोसेस मिल्क, वो उसके ऊपर यानी अगर लग गया तो वो लामहला, ये हमारी माजिद की तो यही रवायत है। तो वो मैंने कहा ये तो लेट मी टेल यू कि दिस वाज वन ऑफ द प्रपोजल। मेरा ख्याल है कि किसी को पुराना पे अपना हमारे लोग यहाँ हैं जिनको हर चीज़ कागज़ मिल जाते हैं और वो पहुँच जाते हैं, चाहे वो उन्होंने पता नहीं क्या रखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेरा ख्याल है वो किसी को पास पुराना पेपर चला गया। कैटेगोरिकल देयर इज नो लेवी ऑफ सेल टैक्स ऑन दिस पैकेज मिल्क। बजट में मुतवस्सत तबके को कोई रिलीफ नहीं मिला। बजट में बार बार तरमीम होती रहेगी। उबूरी हुकूमत को बजट पर नजरसानी करना होगी। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा खुशी है हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। तनख्वाहों में इजाफे के लिए पैसा कहां से आएगा?
इशाक डार साहब ने एक वफाकी बजट पेश किया है। मैंने उसका मुताला किया है कि ये झूठ का पलंदा है और हिंसों का घोर धंधा है। मेरी नज़र में जो IMF का फ्रेमवर्क, ये उस फ्रेमवर्क से मुताबिकत नहीं रखता। और हैरानकुन बात यह है कि वो हुकूमत जिसके 42 दिन बकिया रह गए, उन्होंने 12 माह का बजट दे दिया। मेरी नज़र में ये नॉन स्टार्टर बजट है और जो इंटरिम गवर्नमेंट जब भी आती है उन्हें इस बजट पर नजरसानी करनी होगी। इस बजट से इन्होंने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। मुतवस्सित तबके को इस बजट में कोई रियायत दिखाई नहीं देती। मुझे खुशी है जो हमारा तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम है, उनकी तनख्वाहों में इजाफे का शुनीद है। मैं पूछना चाहूँगा डार साहब से, मुझे बताइए पैसा कहाँ है आपके पास? अभी आपको खबर ये दें कि खानपुर में शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। बिजली बंदिश से कंप्यूटर रजिस्ट्रीज तहरीर करने वालों को सख्त परेशानी का सामना है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, ये जाना नईम से जो आहताए कचहरी में मौजूद है। बिल्कुल सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दिए हैं और खानपुर में पारा तकरीबन 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तो खानपुर में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त आता कचहरी में मौजूद हूँ, जहाँ पर अरैज नबी साहबान और जो वकला साहबान हैं वापटा के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि लाइट बंद होने की वजह से जो तहरीर है, रजिस्टरों की तहरीर, वो कंप्यूटराइज होती है, तो इन्हें स्टाम्प निकलवाने में भी सख्त दुश्वारी का सामना है। मेरे साथ अरैज नबी भी मौजूद है, इनसे जानते क्या कहेंगे लोड शेडिंग के बारे में। जी, लोड शेडिंग ने हमारा जीना हराम किया हुआ है। काफ़ी घंटों से लोड शेडिंग नहीं है। सब गवर्नमेंट का जो हमारे रजिस्ट्री हैं, स्टाम्प है, सब ऑनलाइन हो चुके हैं। कंप्यूटर हमारे बंद हैं, तो सैलान भी परेशान है, इनकी रजिस्ट्रियाँ स्टाम्प हैं। काफ़ी घंटों से बिजली नहीं है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है। हम हुकूमत से एहतजाज करते हैं कि ये गैर एलानिया लोड शेडिंग का ये मसला हल किया जाए। हम 4 घंटे से यहाँ रजिस्ट्री करवाने के लिए आए हुए हैं, तो बिजली ना होने की वजह से हम बहुत परेशान हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा कि शहरी बता रहे थे कि लोड शेडिंग की वजह से जो हमारे काम हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं, और एक तो शदीद गर्मी है। तो शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि खानपुर में। बहुत शुक्रिया आपका, खानपुर से अपडेट कर रहे थे आप। उधर भक्कर में भी गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया है, जिससे ना शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बोलिए सलीम अख्तर से जानेंगे। जी सलीम। बिल्कुल, पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह भक्कर में भी बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। घर में ख़वातीन और बच्चों के अलावा कारोबारी हजरात भी लोड शेडिंग से शदीद मुतासर हैं और लोड शेडिंग का गिला करते नज़र आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बानो बाज़ार भक्कर में ऐसे ही एक कारीगर के पास जो कि लोड शेडिंग से मुतासर हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। कारोबार के दिन है, सीज़न के दिन है, बिजली नहीं है, बहुत परेशानी है। कस्टमर बैठे होते हैं, बहुत परेशान है। 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा जाती है। इस तरह काम नहीं होगा। काम हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में ताउन करे गवर्नमेंट इदारों से, और बिजली के जो फराहमी है उसको यकीनी बनाए। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि हमें ना तो रात को सुकून है, ना हम सही तरह सो सकते हैं, और दिन को भी हमारा कारोबार बिजली के ना होने की वजह से शदीद मुतासर है। अब बकरा ईद का सीज़न है, लेकिन हमारी मशीनें बिल्कुल बंद हैं और हम शदीद परेशान हैं। उन्होंने आला हुकाम से अपील किया है कि बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। जी, जहानिया में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से कारोबारी तबका शदीद परेशान दिखाई दे रहा है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अजीम सरवर से। गर्मी में शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जहानिया और उसके गिरदोनवा में इस वक्त बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, जहाँ पर जो आम शहरी है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, जबकि जो कारोबारी तबका है वो बिजली ना होने की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद है, दुकानदार से बात करते हैं। भाईजान बताइएगा, आपका कारोबार कैसे चल रहा है? लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग की वो सूरत हाल ये है भाईजान, 2 घंटे लाइट आती है, 3 घंटे चली जाती है। कारोबार तबाह हो गए रह गए। बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए बहुत मुश्किल हुआ हुआ है इस वक्त। बिजली होगी तो काम करेंगे, पहले गाहक नहीं है, गाहक आते तो आगे बिजली नहीं है। हुक्मरानों से अपील है कि खोश के नाखून लें और खुदारा हमें बिजली दें। जी बिल्कुल, एक तरफ तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ इस वक्त जो यूनिट हैं बिजली के उसमें भी बहुत ज़्यादा, उसकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है। अवाम नास की अपील है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत को चाहिए कि अवाम के हाल पर रहम किया जाए और बिजली की जो बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मियांवाली में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल खान से जानेंगे। जी बिलाल।
तरह मियाँ वाली की बात की जाए तो मियाँ वाली में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। मियाँ वाली के शहरी और देही इलाका जात में 3 से 4 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। जो कारोबारी शहरी हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। कारोबारी शहरियों का कहना है कि जो उनके कारोबार हैं वो लोड शेडिंग की वजह से ठप हो चुके हैं और इनका ये भी कहना है कि रोज़ हुकूमत जो है बिजली की कीमतों में इजाफा करती जा रही है, लेकिन जो बिजली की लोड शेडिंग है उस पर काबू नहीं पा रही। और दूसरी जानिब मियाँ वाली के मौसम की बात की जाए तो मियाँ वाली का मौसम शदीद गर्म हो चुका है। गर्म मौसम की वजह से बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जो घरेलू खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और मरीज हैं उनको भी शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जो लोड शेडिंग शुरू की गई है। और अब सिंध के बजट की बात करें तो आइंदा माली साल के लिए सिंध का 22 खरब से जायद का बजट आज दोपहर पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी है। मजमूई सूबाई तरक्याती बजट 410 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। सिंध हुकूमत में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा मुतवक्के है। कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब 52 करोड़ रखने की तजवीज़ है। किसका फायदा किसका घाटा, किसे मिलेगा रिलीफ, किसको होगा टाटा। सिंध का 22 खरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह सूबाई असम्बली में बजट पेश करेंगे। मजमूई सूबाई तरक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, I'll start my budget speech हिकिड़ो सिंधीअ में शेर पढ़णु चाहींदुसि। आहे असांजे इन ऑनरेबल ऑगस्ट हाउस जो मेंबर साईं सरदार शाह, उन जो शेर आहे, उन खां शुरूआत कंदुसि अगरि इजाज़त हुजे। वरी इश्क जी का इमारत अॾण लाइ ग़मनि खे मिटीअ में गॾींदा अचूं पिया। अंदर में नयूं के उम्मीदूं खणी नए सिर सिंध अॾींदा अचूं पिया। Mr. Speaker, sir, I feel humbled to begin with the name of Allah subhanahu wa ta'ala for his countless bounties upon me, my leadership and the Pakistan People's Party. That Allah chose me to serve the people of the second largest province of Pakistan, and it is heartening that we will complete consecutive third term in August of 2023. Sir, I also feel privileged on my ultimate standing before this August House to present the annual budget for this tenure. This budget is truly reflective of noble vision of leadership of Pakistan People's Party, its founder chairman Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, Chairman Bilawal Bhutto Zardari and President Asif Ali Zardari, of a prosperous and inclusive Sindh wherein the fruits of development will reach all the regions and citizens, especially the underdeveloped areas, our youth, farmers, women, traders and senior citizens. Mr. Speaker, sir, I'd just like to lay the history of budget making in this August House. As you know, Sindh was separated from the Bombay Presidency in 1935. The first budget in this assembly was presented on the 3rd of August 1937 by Sir Ghulam Hussain Hidayatullah, who was then the Chief Minister of Sindh and also held the finance portfolio. Since then, after that 58 budgets have been presented, and today I am presenting the 59th budget in the Provincial Assembly of Sindh. Sir, I feel honored and humbled that out of these 59 budgets, there have been several finance ministers, chief ministers who presented budgets. I have been associated with 14 of these 59 budgets, almost 25%. Today is my 12th budget speech in this August House, and I have had the honor of presenting more than double the number of budget speeches by any other finance minister or chief minister before. And sir, I'm truly, truly humbled for my leadership to have given me this honor. I'm truly humbled and thankful to Almighty Allah for giving me this opportunity.
Sir, Sindh has recorded unprecedented development during the last 5 years despite natural disasters of COVID and floods, which imposed an additional burden of rupees 100 billion on the provincial economy and toppled the entire development portfolio. It compelled us to redirect our focus to post-flood restoration and slow down restoration and rehabilitation activities. Besides, massive global economic slowdown and scarce financial resources also forced the government to take unpopular decisions for economic and financial stabilization. Here I must acknowledge the support and assistance extended by the provincial cabinet of this House for the effective and efficient implementation of austerity measures and public policies that facilitated the general public to brave such testing times of political, social and economic uncertainty. So, the next year's budget, our motto for the budget, the motto of the government of Sindh is revitalizing prosperity. We want to follow a path to economic recovery and resilience against climate change. The government is determined to create a path towards economic recovery while proactively addressing the urgent need to tackle climate change. So the key pillars for the budget 2023-24, and I'll go into more detail later, are economic stimulus recovery, climate change adaptation and mitigation, green and sustainable initiatives, social welfare and human development, infrastructure development, good governance and transparency. So before I talk about the budget, I'll talk about a little about last year and the multiple crises that we faced in view of the rain and flood devastation last year. Despite having deep sentiments for COVID, rain and flood affected people who exhibited resilience, determination and strength in the face of life-threatening challenges, I am pleased to inform this August House that with the consistent implementation of flood response strategy, Sindh government has successfully combated the floods like we bravely fought the menace of COVID-19. मुझे इधर एक शेर पढ़ लेता हूँ। ये जब ये कोविड का और उसके बाद ये फ्लड्स का सारा हो रहा था, उसकी मुनासिबत से है, जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देते हैं और हमारी कश्ती पार लगी. So Sindh carried the maximum burden in the country for both COVID and flood and faced disproportionate devastation in 2022 with 1,000 people dying and around 8,000 injured. Significantly affected the houses, transport, agriculture, irrigation and communication infrastructure. The post-flood assessment conducted by the district administration, the World Bank, the UNDP, the European Union and others showed that more than 4.4 million acres of agricultural land were destroyed and irrigation and flood protection systems were damaged. About 437,000 livestock worth $117 million were lost and nearly 60% of the road network was undermined. Moreover, a total of 2.36 million houses were destroyed, affecting 12.36 million people, including 650,272 partially damaged houses and 1.44 million fully damaged houses. In addition, 2,548 government buildings lost their shape, representing nearly 83% of the total nationwide figure. Sindh alone suffered a huge loss of $5.5 billion in the housing sector alone. However, the Sindh government's aggressive response to the natural calamity reduced the impact of the destruction. The Sindh government immediately executed the emergency relief activities through the Provincial Disaster Management Authority in association with District Administration, Pakistan Army, Pakistan Navy, Pakistan Air Force and paramilitary forces for prompt evacuation of stagnant water. The aid and assistance received from local and foreign sources were distributed among the affected people. It includes supply of clean drinking water, 1 million tents were distributed, 630,000 plastic tarpaulins, 3.95 million mosquito nets, 2.55 million ration bags, 1.84 million blankets, sanitation kits
and a lot more essential items for daily living. During the flood and rain emergencies, 26 mobile hospitals were deployed in 16 districts to provide health facilities to the flood and rain affected people. More than 190,000 people were treated with free medicines, and more than 20,000 lab and other tests were conducted by the mobile hospitals only in 46 days of the emergency. To ensure effective operation and maintenance of these mobile hospitals, we have allocated rupees 556 million for the financial year 2023-24. UNHCR and UNFP also assisted with the supply of food items to the affected areas. In addition, we are grateful to the federal government who distributed through the Benazir Income Support Program. And Mr. Speaker, and all the colleagues here would remember that after the shahadat of Muhtarama Benazir Bhutto, President Asif Ali Zardari initiated the Benazir Income Support Program. This has been a flagship program for all governments since then. And this flagship program which President Zardari started, this was the vehicle which enabled the federal government to provide assistance to the flood affectees in a swift and efficient manner. So I'm grateful to the federal government, I'm grateful to the Benazir Income Support Program for providing the necessary immediate cash relief to the flood victims in the province of Sindh as they did in the rest of Pakistan. So Shaheed Muhtarama Benazir Bhutto, even after Shahadat, is in everybody's hearts in the entire Pakistan, and it was due to Shaheed Muhtarama Benazir Bhutto that this money was available to the people. And as I said, President Asif Ali Zardari, who had initiated this program, he should be given all the credit for giving us such a vehicle which we can immediately use and provide flood assistance to people. So the government of Sindh, in addition to the immediate relief, we have negotiated, and I'll talk in more detail later on, about $1.7 billion from the World Bank for 5 projects, and we secured another $200 million from the Asian Development Bank. I'll talk in more detail about this later. So before I move to the budget numbers and the budget of 2023-24, I want to apprise the House about the global and national economic nosedive that we faced in the last few years. Sir, it is imperative for me to apprise the August House about the existential crisis the government is currently going through due to the dismal performance of the previous federal government, both in terms of geopolitics and geoeconomics. The subversive national economic policies, governance failure, excessive external borrowing, foreign policy fiasco, and monetary and fiscal policy debacle coupled with global economy meltdown due to enormous challenges like inflation, climate change, the war in Europe, and supply chain disruptions due to COVID and geopolitics caused severe economic problems, inflated commodity and utility prices, surging oil prices, and unfortunately rising consumer price index. ये पिछले जो 3 साल गुजरे हैं, सर एक और चीज मैं इधर बताना भूल गया. The key to progress is stability. By the grace of Almighty Allah, because of the leadership of the Pakistan People's Party, Sindh has remained stable for the last 5 years. आजकल लोग इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, हम तो इस्तेकाम खुद हैं जी, हमने आपको दिखाया है. आपको मैं स्टेबिलिटी की क्यों बात कर रहा हूं? ये मेरा 5वां बजट है इस साल. एक ही फाइनेंस मिनिस्टर, फेडरेशन में इन 5 सालों में 6 फाइनेंस मिनिस्टर्स गए. तो इस्तेकाम लाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लाएगी, सिंध में ला चुकी है, इंशाल्लाह ताला फेडरेशन में लाएगी. और इन पिछले खास तौर पे पहले 3.5 सालों के दौरान इन्होंने समझा कि ये जो अपनी सख्ती करे, यू योरसेल्फ स्टिल अ विक्टिम ऑफ दोज, और जो तंग कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे ये रेत की दीवार की तरह कुछ पार्टी एक बिखर गई अभी, ये कुछ होगा. लेकिन मुझे यहाँ अगेन मैं आज हिम्मत इसलिए कर रहा हूँ, उधर सारे दोस्त बैठे हैं,
कि शेरो शायरी मेरा इट्स नॉट माई फोर्टे, आप सबको पता है, लेकिन अब ना रऊफ सिद्दीकी है ना दूसरे फेडरल मिनिस्टर बन गया, अब इनमें दम नहीं है फैसल सलवारी है। तो मैंने आज इस्तिदा की है कि कुछ शेर और शायरी मैं भी कर लूँ, नहीं तो हमेशा मैं गलतियां कर जाता हूँ, आज भी शायद करूंगा, लेकिन हर वक्त सीखने का कभी काम खत्म नहीं होता। तो मैं फहीम जोगापुरी का एक शेर पढ़ना चाहूंगा जो कि इस मुनासिबत से कि जिन्होंने कोशिश की थी। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, हम और ज्यादा ऊंचा उड़े हैं इन 3.5 सालों में। उसके बाद और इसकी प्रूफ मिली है अभी जब इलेक्शंस हुए लोकल गवर्नमेंट की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारे सिंध के सब डिस्ट्रिक्ट्स को स्वीप किया है। तो जितना दबाओगे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पार्टी और ऊंचा उड़ेगी इंशाल्लाह। Sir, it is unfortunate that the people in Sindh have to endure fallout of ever higher inflation at about 40%, with negligible anticipated growth rate for next financial year, while fuel and energy prices have also risen up to 50%. Mr. Speaker, a weak economy is always prone to setbacks in negotiation with IMF and development partners for its inability to fulfill compelling demands for signing hardened terms only for the sake of strengthening foreign exchange reserves, as Pakistan has been facing since natural disasters entrapped the nation. However, despite being entangled by multiple crises, Sindh proved to be a responsible federating unit and consented to fiscal management to maintain a cash surplus of rupees 184 billion for the current financial year 2022-23, according to the federal government's commitment with the IMF to secure the required bailout package. Notwithstanding all this, the Pakistan People's Party's dauntless and unwavering resolve to face crisis converted threats into opportunities. We revised the entire development portfolio and set priorities aligned with the emerging post-flood demands. We recognize the need for adaptability and strategic decision-making. We carefully evaluated our priorities, ensuring that every rupee invested delivered maximum value. Our commitment to the people of Sindh remains unwavering, and we will spare no effort in overcoming the current economic challenges as we take inspiration from this quote of the father of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and I quote, "With faith, discipline and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve, and inshallah we will achieve." May Almighty Allah bestow us with the courage and capacity to serve the people of Sindh on the vision and principles set forth by our founding father, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Qaid-e-Awam Shahid Zulfikar Ali Bhutto, Qaid-e-Jamhuriyat Shahid Mohtarma Benazir Bhutto. They strove relentlessly to achieve these goals. Now, under the dynamic leadership of PPP Chairman Bilawal Bhutto Zardari and President Asif Ali Zardari, the Pakistan People's Parties and its government continue to work to make Sindh a perfect model of a true welfare state. I'll also like to thank, though the Muttahida Qawmi movement is not in coalition with us here in the provincial government, but the Muttahida Qawmi movement is in coalition with us at the federal level. So I'd like to thank the Muttahida Qawmi movement, its leader Khalid Maqbool Siddiqui, Prime Minister Mian Mohammad Shahbaz Sharif, and other political parties who have worked with us during these difficult times. Mr. Speaker, now I'd like to present before the House the revised estimates of 2022-23. Revised estimates for provincial expenditures have been proposed to be 1.76 trillion for the year 2024 as against the budget estimates of 1.713 trillion in financial year 2022-23. It includes current revenue, capital and development expenditure. Revised estimates for 2023 for current revenue expenditure have been pitched at rupees 1.297 trillion, representing 8% increase against budget estimates of 1.199 trillion. The increase is mainly due to additional expenditure incurred on raid and flood relief and rehabilitation activities. Revised estimates for the year 2022-23 for current capital expenditure have been proposed at rupees 62.13 billion,
showing 8% increase over budget estimates of rupees 54.481 billion for the year 2022-23. The increase is due to worsening rupee-dollar parity from Pak rupee 186 to almost Pak rupees 300, raising the expenditure by rupees 7.6 billion towards repayment of loans. The estimates for investment activities have been revised to rupees 21.5 billion as compared to budget estimates of rupees 23.6 billion. So the revised development expenditure for 2022-23 stands at rupees 406.32 billion. This is the highest ever development expenditure that inshallah we are going to achieve this year. Prior to this, it was 2017-18 that we achieved the highest. Then I told you, कोई आ गया और 3-3.5 साल हमारे ऐसे गए, 1 साल हमें रिकवर करने में लगा. इस साल we are back on our feet despite floods. Despite so many other challenges, we've had the highest ever development expenditure. And I'll talk about next year also. So the overall receipts, the federal transfers have increased from the federal transfers that we hope to get from the federal government by the end of the year are 1.08 trillion rupees against a budget of 1.055 trillion. Revised estimates for divisible pool component stands at 982.54 billion against budget estimate of 958.62, and for straight transfers at rupees 71.15 billion against budget of 70.82 billion. As I said, we expect to receive this budgeted amount by the end of the current financial year. As far as own resource revenues are concerned, we are going to pitch the revised estimates at rupees 358.29 billion against a budget estimate of 374.5 billion. Mr. Speaker, I'm glad to tell you that yet once again, the Sindh Revenue Board, inshallah, will meet its target of rupees 180 billion by the end of this year, and I'll tell you about our targets for next year. Non-tax revenues have been, the revised estimates for non-tax revenues have been proposed at 23.29 billion. The revised estimates for foreign project assistance have been proposed at rupees 147.82 billion, while federal PSDP has been estimated at rupees 14 billion. The budgetary support grant relating to education sector stands at 9.04 billion in the current financial year. So before I go to the numbers for the next year and give you some details of next year's budget, I want to present to the August House a vision for our vision for financial year 2023-24, a vision for an empowered and inclusive Sindh. Pakistan People's Party is a democratic and progressive party. It believes in ideology of inclusive governance. It envisions a progressive Sindh where institutions, policies and services are accessible, accountable and responsive to all members of the society. True reflection of this philosophy can be observed in budget estimates of 2023-24. Mr. Speaker, in order to get to a budget which is acceptable not only by this House but by the people of this province, a pre-budget assembly session was held under Rule 143 of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Sindh. Let me remind all of you here that we are the only House, the only Assembly who has rules for a pre-budget session. The other 3 provinces or the National Assembly does not have any such rule. So, sir, this pre-budget session was held during the months of January to March for general discussion on the upcoming budget and getting well-considered suggestions of the honourable members of this House. It helps in setting budget priorities according to ground realities and actual demand and needs of people. The invaluable feedback and suggestions have been duly incorporated while finalizing budget estimates of 2023-24. Mr. Speaker, the Government of Sindh developed a tool for citizens' budget in the fiscal year 2021-22. It provides statistical analysis of findings of a survey conducted to gather feedback from the intelligentsia, serving officers, scholars and academicians, and the general public. It has transformed the conventional budgeting process into participatory decision-making
whereby public opinion on prioritization of public expenditure and improving ways and means for revenue generation have been well considered in finalizing budget estimates of 2023-24. We have conducted awareness sessions this year in reputable institutions like Sakhar IBA Karachi, Applied Economics Research Center Karachi, and the Commissioner's Office Hyderabad to inform people about the significance of the activity and its effectiveness in developing a solution based on the insights, opinions, and suggestions shared by intellectuals. Intellectuals, scholars, researchers, stakeholders, and citizens. A total of 356 persons, including 240 males and 107 females, participated to provide feedback through questionnaire. The feedback and invaluable suggestions have been transformed into budget estimates for the year 2023-24. The findings of the survey and its analysis are published every year along with the annual budget of the province, and you'll find that in your books. Sir, now I present to the House the budget estimates for the next year. Budget outlay for provincial expenditures for the financial year 2023-24 is rupees 2.237 trillion. This marks a 35% increase over budget estimates of 1.713 trillion in the current financial year 2023-24. I would like to briefly present the components of current revenue, capital and development expenditure. Budget estimates 2023-24 for current revenue expenditure have been pitched at rupees 1,411 billion, being 17.65% higher than budget estimates of 1.199 trillion for the year 2022-23. So the increase is mainly due to massive recruitment of the government, especially in the education sector, and I'll talk more about that, causing the employee-related expenses to take a sharp leap. I just want to mention the few areas where we have put in the most budget as far as the current revenue expenditure is concerned. The highest budget has been allocated to school education of about 267.5 billion, followed by health, almost 228 billion rupees, followed by law and order in the home department, 143 billion rupees, and local government, which is 112 billion rupees. The current capital expenditure